So today we will discuss few properties of inverse Laplace transforms. So with the help of those properties, we can also evaluate the inverse Laplace transforms of the functions. So general properties of inverse Laplace transforms. So we have few properties like linearity property, second one is shifting property, third one is change of scale property, fourth one is multiplication by s and division by powers of s. So today we will discuss these 5 properties, okay. And in next presentation we will discuss inverse Laplace transforms of derivative, inverse Laplace transforms of integrals, and finally convolution theorem. So as we have mentioned in last topic that for finding inverse Laplace transforms, the following methods have been used which are given below. By use of partial fraction, we have already discussed this topic, use of some important properties, convolution theorem, and use of Laplace transforms tables. So in this topic we will discuss only general properties of inverse Laplace transforms. Okay. And we know we have these properties: linear property, shifting property, change of scale property, multiplication by s property, division by power of s property, then inverse Laplace transforms of derivative and integrals. Okay. So first one is linearity property. As we know, in Laplace transforms, the linear property is this: if a, b, c be any constants and f, g, h any functions of t, then L a f t plus b g t minus c h t is equal to a L f t plus b L g t minus c L h t. But in case of inverse Laplace transforms, this property is like this: if L f t is equal to f bar s and L g t is equal to g bar s, then L inverse C1 f bar s plus C2 g bar s is equal to C1 L inverse f bar s plus C2 L inverse g bar s. And we know, since L f t is equal to f bar s, this means f t is equal to L inverse f bar s. So L inverse f bar s is f t and L inverse g bar s is g t, where C and C1 and C2 are any two constants. So in this inverse Laplace transforms, we have this linearity property. Okay. So by using this property, let us solve few problems. Find the inverse Laplace transforms of 2s plus 1 divided by s square minus 4. This means that f bar s is given. Okay. So f bar s is given. So taking inverse Laplace transforms on both sides. Okay. So L inverse f bar s is equal to L inverse 2s plus 1 divided by s square minus 4. Using the linearity property, this can be written as L inverse 2s divided by s square minus 4 and L inverse 1 divided by s square minus 4. So separate these two, okay, 2s and 1. And we know L inverse s over s square minus a square is cos hyperbolic at, and L inverse 1 over s square minus a square is 1 over a sin hyperbolic at. Using these two concepts here, we get this inverse Laplace transforms of the given function. तो इस तरह से आपने linearity property को use करना है, right? Now one more question: find the inverse Laplace transforms of 1 over s e raised to power minus 1 over under root s. Clear? So what is given? This f bar s is given. Clear? And since we know that e raised to power minus 1 over under root s is, use the series of exponential series, right? So summation n 1 to infinity minus 1 divided by under root s power n divided by n factorial. So we know e raised to power minus 1 over under root s is this. Okay. Just simplify, we get summation n 0 to infinity minus 1 power n 1 over n factorial and s under root power n means s power n over 2. So we obtain e raised to power minus 1 over under root s is this expression.
and we need 1 over s multiplied by this. So 1 over s e raised to power minus 1 over under root s is this summation n 0 to infinity minus 1 power n over n factorial, this term as it is, clear, and it becomes 1 over s n over 2 plus 1, okay, 1 over s, so plus 1. Now taking inverse Laplace transforms, okay. So L inverse here, L inverse 1 over s e raised to power minus 1 over under root s. We have to evaluate inverse Laplace transform of this function. It becomes L inverse summation n 0 to infinity and rewrite as it is here, okay. Now it becomes summation n 0 to infinity minus 1 power n over n factorial outside this L inverse, okay, and within the bracket 1 over s n over 2 plus 1, this same term, okay. And we know this formula, L inverse 1 over s power n is equal to t raised to power n minus 1 divided by gamma n, n varies from 0, 1, 2, 3 and so on, okay. So using this standard result here, okay, we obtain summation n 0 to infinity minus 1 power n over n factorial as it is, and it becomes t power n over 2 divided by gamma n over 2 plus 1, okay. So use these standard formations, okay, here you will get the results. Now come to this second property. We know in the Laplace transforms property, this property first shifting or first translation property or S shift theorem. So in that property, replace s by s minus a in the transformation, okay. So if L f t is equal to f bar s, then L e raised to power a t f t is equal to f bar s minus a. You just replace this s by s minus a. But in case of inverse Laplace transforms, we have this property. If L inverse f bar s is equal to f t, if this result is given, L inverse f bar s is equal to f t, then L inverse f bar s minus a is equal to e raised to power a t f t, e raised to power a t f t. And you know this f t is nothing but L inverse f bar s, okay. So this means L inverse f bar s minus a is equal to e raised to power a t L inverse f bar s, clear. So use this property here in this problem. Find the inverse Laplace transforms of 1 over s plus a power n plus 1, n non-negative integer. So this means we have given f bar s. So to find inverse Laplace transforms, so taking inverse Laplace transforms on both sides, we obtain L inverse 1 over s plus a power n plus 1 is equal to e raised to power minus this a t L inverse 1 over s n plus 1, and this is by shifting property. So use shifting property here, we obtain this result. अब इसका जो Laplace transforms है, inverse Laplace transforms है, वो आप आसानी से निकाल सकते हो by using this concept. L inverse 1 over s power n is equal to t power n minus 1 over n minus 1 factorial, n varies from 1 to 3 and so on. So using this property, this problem, this expression here, we get e raised to power minus a t as it is t raised to power n divided by n factorial, okay. So in this way you can evaluate these type of problems, okay. Now one more question. Find the inverse Laplace transforms of this function. So f bar s is given, s divided by s plus a square plus b square. To find the inverse Laplace transforms, so L inverse s divided by this result is equal to e raised to power minus a t L inverse s minus a divided by s square plus b square, clear, s square plus b square. So by shifting property we obtain this result. So use this property, this result can be written as this result, okay. S minus a replaced by s and e raised to power a t common. So here e raised to power minus a t common and replace s minus a is equal to s. Here replace s is equal to s is equal to minus a, okay. So we obtain s minus a divided by s square plus b square. अब देखिए इस पार्ट को कैसे करोगे, लीनियर प्रॉपर्टी, यूज लीनियर प्रॉपर्टी, s divided by this minus a divided by this, okay. So s divided by this result and a over b divided by this term, we can write like this way,
okay, and e raised to power minus at as it is, no change. Okay. Now use these standard expressions. L inverse 1 over s square plus a square is 1 over a sin at, and L inverse s over s square plus a square is cos at. So use these expressions here, you will get this inverse Laplace transforms. E raised to power minus at as it is, and this term is cos bt, and minus a over b as it is, and this term is sin bt. Okay. So let us consider now third type of property. We know in Laplace transforms, if L ft is equal to f bar s, then L f at is equal to 1 over a f bar s over a. Clear? But in inverse Laplace transforms, what happened? L inverse f bar ks is equal to 1 over k f t over k. Remember this expression. L inverse f bar ks is equal to 1 over k f t over k. तो आप इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर भी कर सकते हो. ठीक है, जब भी आपने इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना, एक टेबल बना लो. ठीक है, पहले आप इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को लिखिए, उसके बाद इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को देखिए और देखिए क्या चेंज हो रहा है. ठीक है, तो पहली चार प्रॉपर्टी में तो डायरेक्ट चेंज है, जैसे वहां लिखा गया उसी से रिवर्स है, बट जो लास्ट की दो प्रॉपर्टीज होंगी वो टोटली रिवर्स होंगी. ठीक है, देखिए कैसे. नाउ दिस प्रॉपर्टी इज थर्ड प्रॉपर्टी. ओके, so find L inverse 64 over 81 S4 minus 256. Okay, so this means f bar s is 64 divided by this expression, and 64 means 4 cube, 81 S4 means 3s power 4 minus 4 power 4. Now taking inverse Laplace transforms, so it becomes L inverse. We know L inverse a cube over s4 minus a4 is a over s square minus a over s square plus a square, and that can be written as 1 by 2 sin hyperbolic at minus sin at, and that one is function of t. Okay, now here L inverse 64 over this result is equal to L inverse 4 cube over 3s power 4 minus 4 square. So by using this concept, okay, this result is basically L inverse f3s. Okay, here 3s, so f3s where with a is equal to 4. So this means that if you compare these two results, f3s is equal to basically a cube over s4 minus a4, but s is 3s, so 3s power 4 minus a4, and ft is equal to 1 over 2 sin hyperbolic at minus sin at. Clear? Now write the exact result to find the inverse Laplace transforms. ये रिजल्ट आपको दे रखा हुआ है. क्लियर? ये रिजल्ट आपको दे रखा हुआ है. नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी विद k is equal to 3. So this means L inverse f3s is equal to 1 over 3 ft over 3. What is ft? Ft is this. Ft is this. Use this formula here. So 1 over 3 as it is, and 1 over 2 sin hyperbolic 4t over 3 minus sin 4t over 3. And just simplify 1 over 6 sin hyperbolic 4t over 3 minus sin 4t over 3. So in this way you can calculate few more problems for practice. Okay, तो आपको इस प्रॉब्लम को देखिएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है. हमें इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स ये कैलकुलेट करना था, जिसको हमने इस तरह से लिखा हुआ है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर s के बदले में क्या हो गया, 3s हो गया. अब 3s हो गया तो रिजल्ट बनाने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी है. ठीक है, तो हमने इसी फॉर्म में इसको रहने दिया. ठीक है, एंड वी नो दिस रिजल्ट इज इक्वल टू दिस रिजल्ट. सो बाय यूजिंग दिस मेथड, बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, कैलकुलेट दिस after using the change of scale property. Okay, use this result here, you will get the inverse Laplace transforms of the given problem. Now fourth property is, if f dash t be continuous and Laplace transforms of ft is equal to f bar s, then L f dash t is equal to s f bar s minus f0 provided limit t tend to 0 e raised power minus st f t is equal to 0. तो ये जो प्रॉपर्टी थी ये थी आपकी Laplace ट्रांसफॉर्म की. ठीक है, अब यहां पर क्या होने जा रहा है? यहां पर होने जा रहा है कि अब आप डेरिवेटिव तो यहां ले रहे हो, लेकिन जब आप इनवर्स लोगे तो s के साथ मल्टीप्लाई करो. ये जो प्रॉब्लम है Laplace ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, अब इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव नहीं रहेगी, क्योंकि यहां पर रिजल्ट है मल्टीप्लाइड बाई s. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन बाई s ऑफ दिस f बार s. तो वो जो प्रॉपर्टी है वो किस में चेंज हो जाएगी? ठीक है, और जब मैं बात करूंगा कि मल्टीप्लिकेशन बाई s हियर,
तो वो होगी आपकी डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी कि डेरिवेटिव के ऊपर इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स कैसे निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए एस एफ बार एस की अगर प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, एल इफ एल इनवर्स एफ बार एस इज इक्वल टू एफ टी and f0 is 0, then L inverse S f bar S, this L inverse S f bar S is equal to this f dash t mean d over dt ft, d over dt ft। तो आपकी प्रॉपर्टी जो डेरिवेटिव है वो आपकी कन्वर्ट हो गई मल्टीप्लिकेशन बाई s। तो यहां पर वो अब चेंज आपको नजर आएगा, ठीक है। सो इन जनरल L inverse S power n f bar S is equal to dn over dt n ft, provided f0 is equal to f dash 0 is equal to and so on fn minus 1 0 is equal to 0. Clear? So use this property in this problem. Evaluate the following L inverse S over S square minus A square. So this means f bar S is given. Purpose is to find the inverse Laplace transforms. So means L inverse 1 over S square minus A square, we know this result is sin hyperbolic AT over A. अब आपकी प्रॉपर्टी क्या है, S के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस यहां पर आप जब S के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कैसा आना चाहिए, डेरिवेटिव दिस d over dt ft इस फॉर्म में आना चाहिए। तो व्हेन L इनवर्स दिस रिजल्ट इज sin hyperbolic AT over A, when you multiply by S we get d over dt this expression. Okay, sin hyperbolic AT divided by A, just simplify, just derivative with respect to t, you will get the result, ठीक है। तो अगर इस टाइप से पूछा गया हो S divided by this, तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ओके, सो इफ यू नो L inverse 1 over S square minus A square, then use this property, just derivative, you will get the answer. Okay, and this means L inverse S over S square minus A square is equal to cos hyperbolic AT. Clear? Now, fifth property in Laplace transforms is if L ft is equal to f bar s, then L integral 0 to t ft fu du is equal to 1 over s f bar s. तो यहां इंटीग्रल टाइप की प्रॉपर्टी है, Laplace transforms of इंटीग्रल, ठीक है। जब मैं इनवर्स की बात करूंगा, ओके, जब मैं इनवर्स की बात करूंगा तो ये होगा f bar s को जब आप डिवाइड करोगे तो वो प्रॉपर्टी क्या है, ओके। सो दिस मीन्स दैट डिवीजन ऑफ बाय पावर्स ऑफ s, ठीक है। तो ये इंटीग्रल प्रॉपर्टी है और मैं यहां पे ट्रांसफर इसको कर रहा हूं डिवीजन बाय पावर्स ऑफ s। इन दिस प्रॉपर्टी व्हाट हैपेंड, L इनवर्स f बार s इज इक्वल टू ft इफ देन L इनवर्स f बार s डिवाइडेड बाय s इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय s। जब ये करोगे तो क्या मतलब रिजल्ट आएगा, इंटीग्रल 0 टू t ft dt। सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, ओके। अगर आपके पास यहां s के बदले में s स्क्वायर है तो आपको 2 बार इंटीग्रल लेना है, अगर यहां पर s क्यूब है तो आपको 3 बार जो है वो इंटीग्रल यूज करना है। क्लियर? तो सेपरेट करके भी कर सकते हो, इसको अलग से कर लो, फिर वो रिजल्ट आएगा वो वहां सब्स्टिट्यूट करके फिर से इंटीग्रल ले लो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर में पावर क्या है। क्लियर? सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Find the inverse Laplace transforms of s plus 2 divided by s square s plus 3. So here we have given f bar s, okay, f bar s is given, clear, taking inverse Laplace transforms. Then what happened, L inverse s plus 2 divided by s square s plus 3, okay. This can be written as s divided by denominator plus 2 divided by denominator. So L inverse 1 over s, so s cancel, so s plus 3 plus L inverse 2 divided by s square s plus 3. तो हम एक बार इसको सॉल्व करते हैं, एक बार इसको सॉल्व करते हैं। यहां s लगा हुआ है, यहां s स्क्वायर लगा हुआ है। So using this property we can solve this problem, okay. So we know that L inverse 1 over s plus 3 is e raised to power minus 3t L inverse 1 over s. This means e raised to power minus 3t. Okay. Now calculate this R1. R1 means this L inverse 1 over s, 1 over s plus 3. Okay. 1 over s एक बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इंटीग्रल 0 to t and e raised to power minus 3t dt, t ऑलरेडी है इसलिए u यूज किया गया, e raised to power minus 3u du. Okay. Use here the division of powers of s property. क्लियर? इसको थोड़ा सॉल्व करके देखा, आपका ये रिजल्ट आया। क्लियर? अब देखिए, अब R2 कैलकुलेट करना है,
R2 जब कैलकुलेट करोगे तो क्या बनेगा, R2 इज L इनवर्स 1 over S स्क्वायर 1 over S plus 3, ये आपको कैलकुलेट कर, ये जो 2 है ये मैंने बाहर लगा दिया है, क्लियर। अब ये क्या बनेगा, 2 L इनवर्स 1 over S S plus 3। अब यहां इसका जो है वो आपने ये निकाला हुआ है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स, ओके। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, अब t को आपने u में रिप्लेस कर देना क्योंकि मैं इंटीग्रल t ले रहा हूं, ठीक है, 0 to t ले रहा हूं, क्लियर। सो सॉल्व दिस इंटीग्रल, ओके, यू विल गेट दिस वैल्यू, यू विल गेट दिस वैल्यू। तो इस टाइप के कुछ और प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लमें निकल आएंगी कि कैसे इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स को इवैल्यूएट करना है। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा सारी वैल्यूज को, ठीक है, इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी, इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, एंड फाइनली यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, क्लियर। नाउ लास्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ 1 over S cube S plus 1। S cube डिनोमिनेटर में S cube आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब 3 बार आपको इंटीग्रल लेना पड़ सकता है। सो हियर f bar S is equal to 1 over S cube S plus 1 to find the inverse Laplace transforms. We know L inverse 1 over S plus 1 is e raised to power minus t, L inverse 1 over S, and we know this L inverse 1 over S is 1, so e raised to power minus t this one, okay, we know this expression. अब एक बार s के साथ डिवाइड करोगे, L inverse 1 over S plus 1 means integral 0 to t e raised to power u, this value is e raised to power this minus u du, clear, just replace t by u so that we can evaluate the result, okay. So then after this integral, evaluation of this integral, we get 1 plus e raised to power minus t again. now उसके बाद स्क्वायर आ जाएगा 1 over s plus 1, इसकी जो वैल्यूज है वो आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है ना, और 1 over s का मतलब इंटीग्रल 0 to t 1 minus e raised to power minus u du, सॉल्व किया तो आपका ये रिजल्ट बना। हमें चाहिए s क्यूब, सो 1 over s स्क्वायर s plus 1 means 1 again 0 to t u plus, substitute this value u plus, ये t plus e raised to power minus t है, तो ये बनेगा u plus e raised to power minus u minus 1 du and limit from 0 to t, okay. Solve this part and you will get the value of the inverse Laplace transforms। तो ये आज हमने 5 प्रॉपर्टीज की हैं, ठीक है, और हर प्रॉपर्टी में हमने देखा इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में वो प्रॉपर्टी क्या थी, और जब हम इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में उस प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं तो क्या वेरिएशन आ रही है, क्या चेंजेस आ रही हैं, ओके। एंड आफ्टर चेंजिंग द रिजल्ट्स वी हैव सॉल्व्ड फ्यू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस 2 more important properties, inverse Laplace transforms of derivative and inverse Laplace transforms of integral, and then we will discuss finally convolution theorem, okay. Thank you very much.